and stability. Yes. So today's topic is about transfer function and stability. Okay. So in our previous lectures, हमने mathematical modeling को देखा था, right? Different systems थे, like mechanical system हो गए, electrical system हो गए, fluid system हो गए और thermal system हो गए. ठीक है. तो आप रिमेंबर कि जो कंट्रोल सिस्टम का जो फर्स्ट लेक्चर था तब मैंने आपको बताया था कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैथमेटिकल मॉडल, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डायनामिक्स ऑफ एनी सिस्टम, हम ट्रांसफर फंक्शन का यूज़ करते हैं, राइट? देयर वर टू मेन मेथड्स. फर्स्ट वाज ट्रांसफर फंक्शन एंड द अदर वाज स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो टुडे वी विल बी कवरिंग ट्रांसफर फंक्शन एंड स्टेबिलिटी. के ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है, उसकी इक्वेशंस कैसे होती हैं, और स्टेबिलिटी क्या होता है. अगर कोई सिस्टम स्टेबल है तो हमें कैसे मालूम होगा, और अगर सिस्टम अनस्टेबल है तो वो कैसे मालूम होगा. सो प्लीज़ कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाई डू वी यूज़ मैथमेटिकल मॉडलिंग? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग इन कंट्रोल सिस्टम? हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमने 3 वीक्स तो इसको ही कवर किया है. सो आपको मालूम होना चाहिए. सो व्हाट इज़ दैट? व्हाट इज़ मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम? कैन यू गाइस हियर मी? Yes, you can. Ma'am, mathematical modeling to analyze the system. Yes, to analyze the system and to obtain the behavior, to understand the behavior of the system, right? अगर कोई सिस्टम है आपके पास, कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, और उसको आपको उसके बिहेवियर को आपको देखना है, उसके रिस्पॉन्स को आपको देखना है, तो जाहिर बात है एक फिजिकल सिस्टम खुद इतना कॉम्प्लेक्स होता है, राइट? तो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल हम क्या करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन हम क्या करेंगे, कोई भी फिजिकल सिस्टम लेंगे, उसके इनपुट आउटपुट को देखेंगे, ठीक है, उसके बिहेवियर को देखेंगे, फिर वही इक्वेशंस हम ऑब्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट? ठीक है. वंस हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हो गई हैं, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट हम उसको किसी सॉफ्टवेयर में इसको सिमुलेट करेंगे, ठीक है. सॉफ्टवेयर कैन बी एनी, मैटलैब देख लें, ठीक है. तो वही इक्वेशन आप विद द हेल्प ऑफ मैटलैब आप उसके रियल टाइम एप्लीकेशन को देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है. फॉर एग्जाम्पल एक रोबोट है, ठीक है, तो वो कैसे काम करता है, उसकी किनेमेटिक्स क्या है, उसकी डायनामिक्स क्या है, उसकी नेचर क्या है, ठीक है, कहाँ पर उस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टम स्टेबल है या नहीं है. तो सारी चीज़ें हम थ्रू विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग हम उसको देख सकते हैं, ठीक है. लेट्स मूव टू द ट्रांसफर फंक्शन. व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन? अ कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन आउटपुट एज वेल एज इनपुट सिग्नल. ठीक है, कोई भी सिस्टम है आपके पास, ठीक है, उसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, रिमेंबर, ठीक है. तो उनका जो दोनों का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन. द आउटपुट इज रिलेटेड टू द इनपुट थ्रू अ फंक्शन कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है. सो हाउ आउटपुट इज रिलेटेड टू दैट इनपुट, that is basically a transfer function. So this function is represented by a block and the complete diagram of control system using these blocks which represent transfer function and arrows which represent various signals is collectively known as block diagram of a control system. ठीक है. So with the help of a block diagram, ठीक है, एक block diagram होती है, ठीक है, उसके हेल्प से हम एक डिफरेंट इनपुट, वहाँ पर एक इनपुट आ रहा होता है, एक आउटपुट जा रहा होता है, ठीक है. तो विद द हेल्प ऑफ दोज इनपुट एंड आउटपुट हम एक सिस्टम को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर फंक्शन. सिंपल, अ ट्रांसफर फंक्शन इज रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट. ठीक है. So for any control system, there exists a reference input termed as excitation or cause which operates through a transfer operation termed as transfer function. ठीक है. कोई भी सिस्टम है, उसको एक्साइट करने के लिए हम इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है. there is a reference input. ठीक है. अगर कोई भी सिस्टम है, ठीक है, आप जनरेटर ले लें या मोटर ले लें, तो उसमें हम जो इनपुट दे रहे हैं मोटर में, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और जो हमें आउटपुट दे रहा होता है दैट इज मैकेनिकल. इन केस ऑफ जनरेटर, जनरेटर में हमारा इनपुट क्या है, मैकेनिकल है, ठीक है, और जो आउटपुट मिलता है हमें इलेक्ट्रिकल मिलता है. सो दिस इज द इनपुट एंड आउटपुट रिस्पॉन्स. ठीक है. Thus the cause and effect relationship between the output and input is related to each other through a transfer function. So the relationship between the output and the input is obtained through a transfer function. ठीक है. So this is a block diagram in simple terms. This is your input and this is your output and this is your transfer function. So the relationship between the output and the input is your transfer function. So in a Laplace transform, if the input is represented by R of S and the output is represented by S of S, then the transfer function will be this. ठीक है. अगर हम किसी ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसको डिनोट करें तो वो होगा लाइक दिस. ठीक है. G of S, C of S of R of S. Now what is C of S here? Is it input or output?
Output. Output, ma'am. Yes. Ma'am, what's mean And GS? GS means a transfer function, basically. It denotes a Okay. transfer function. Okay. Okay. So this is your C of S of RFS. In terms, if you want to write in terms of a simple output, you want to know what is the output, then you will just multiply G of S with RFS and you will get a differential equation, basically. Okay. So in easy words, I would say that transfer function is the output, is the ratio of output to the input, right? And transfer function, what are the benefits? Why do we use transfer function? We'll be covering in our next slide. So why would we use transfer function? So the key advantage of transfer function is that they allow engineers to use simple algebraic equations instead of complex differential equations for analyzing and designing system. Now, जाहिर बात है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो उसकी इक्वेशंस भी कॉम्प्लेक्स ही निकलेंगे, राइट? ठीक है, तो इन ऑर्डर टू हैव टू ऑब्टेन द सिंप्लिसिटी, राइट, वी यूज द ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, we'll use a simple equation for analyzing and designing the system. ठीक है, so with the help of Laplace, जाहिर बात है इसमें ट्रांसफर फंक्शन कैसे ऑब्टेन करते हैं. There are basic steps for that जो आगे स्लाइड में हम कवर करेंगे. यहाँ पर हम देखेंगे कि why do we use transfer function. So we use transfer functions to check the stability of the system, right, whether the system is stable or unstable. Time domain and frequency domain characteristics of the system, okay, and the response of the system for any given input. Okay, so जो भी हम इसको input दे रहे हैं, whatever we are giving the input, what type of response do we get instead of it? What type of output do we get? Okay, either it is unstable or stable, linear, non-linear. Okay, so these kind of responses are taken in consideration. Okay, so the transfer function of a control system is defined as the ratio of Laplace transform of the output variable, this is the output variable, to Laplace transform to the input variable. Now in transfer function, what do? We assume that all initial conditions are zero. Okay, now what are the initial conditions? वो जो हम टाइम डोमेन में हमें कोई इक्वेशन मिल रही होती है, ठीक है, तो उसमें जो टी होता है उसको हम जीरो कर देते हैं. ठीक है, जस्ट फॉर सिंपलिसिटी. ठीक है, तो हम इसको इनिशियल क्या करते हैं कि टाइम डोमेन वाली जो इक्वेशन होती है टी होती है उसको जीरो कर लेते हैं इनिशियल कंडीशन के लिए, ताकि हमें जो इक्वेशन मिले वो सिंपल मिले. ठीक है, so methods of obtaining a transfer function. So basically there are two types of methods for obtaining a transfer function. First is block diagram method and the other is signal flow graph. So these two methods we will be covering in detail in our lecture, in next lecture. Next भी जो lectures होंगे हमारे इंशाल्लाह, तो उस पर हम इसको डिटेल में कवर करेंगे. ठीक है, so it is not convenient to derive a complete transfer function for a complex control system. Therefore, the transfer function of each element of a control system is represented by a block diagram. इसमें हम क्या करते हैं? What do we do? Each element is represented by a block diagram. Okay, so कोई भी इसमें जितने भी कोई भी आपके पास एक physical system है, if you have any physical system, the elements of those physical system would be represented through a block diagram. Okay, so block diagram reduction techniques are applied to obtain the desired transfer function. So there are various methods to reduce those block diagrams into a simple block diagram, and then with the help of those we will obtain a desired transfer function. So signal flow graphs, the modified form of block diagram is a signal flow graph. Block diagram gives a pictorial representation of a control system, whereas signal flow graph further shortens the representation of a control system. ठीक है, जो आपका ब्लॉक डायग्राम है वो आपको एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देखता है. ठीक है, whereas सिग्नल फ्लो ग्राफ है वो थोड़ा उसका उस सिस्टम को थोड़ा शॉर्टन कर देता है इन अ कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट. So the procedure for determining the transfer function of a control system are as follows. First of all, first step जो है हम कैसे ट्रांसफर फंक्शन को ऑब्टेन करते हैं. फर्स्ट स्टेप इज वी फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम, जो हम पहले ही लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं. राइट, रिमेंबर हमने डिफरेंट फिजिकल सिस्टम्स को लिया. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के आप इक्वेशन निकालेंगे. वंस यू हैव ऑब्टेन दोज इक्वेशन, देन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू वुड डू, यू वुड कन्वर्ट दोज इक्वेशंस इनटू Laplace ट्रांसफॉर्म. सिंपल क्या करेंगे, अगर जहाँ पर f ऑफ t है तो उसको हम f ऑफ s कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, ऐसे ही. तो हम इसको सेकंड स्टेप क्या है, हम Laplace ट्रांसफॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे. बट कीप इन माइंड जो हमारी जो इनिशियल कंडीशंस होंगी दैट विल बी जीरो. ठीक है, नाउ स्पेसिफाई सिस्टम आउटपुट एंड इनपुट. ठीक है, अब सिस्टम में हमें देखना है व्हाट्स द इनपुट एंड व्हाट्स द आउटपुट. ठीक है,
जब तक आपको आउटपुट और इनपुट की मीनिंग पता नहीं होगी, जब तक यू वोंट स्पेसिफाई व्हाट इज द आउटपुट इन द सिस्टम एंड व्हाट इज द इनपुट ऑफ द सिस्टम, आप ट्रांसफर फंक्शन को नहीं निकाल सकेंगे, ठीक है। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड नो व्हाट इज द इनपुट ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सिस्टम. So lastly, we take the ratio of the Laplace transform of the output and the Laplace transform of the input, which is the required transfer function. Okay, and the last step would be we'll take the Laplace transform of the output and the Laplace transform of the input, and then we'll just create the transfer function that is required. So in simple words, transfer functions helps you to know the output for any given for any given output without knowing the internal details of the system. ठीक है, हम जब ट्रांसफर फंक्शन को देखते हैं तो उसमें हम उसको जो कोई आपका फिजिकल सिस्टम है उसकी इंटरनल डिटेल्स हमें नहीं मालूम होती, ठीक है। कंसिडर करते हैं कि हमें इसकी डिटेल्स नहीं मालूम, वी जस्ट कंसिडर द इनपुट एंड द आउटपुट, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज इनपुट एंड आउटपुट वी ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन. सो प्रैक्टिकली ट्रांसफर फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैन नॉट सिट एंड एनालाइज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम देखा जाए तो हम कोई अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो उसको हर एक सिस्टम को, हर एक उसकी कंपोनेंट को एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस मैथमेटिकल मॉडलिंग, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन, हम इसको इजी कर सकते हैं ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस. Right, Laplace transform. Using Laplace transform, we can convert many common function into algebraic function of complex variable s. ठीक है, अब Laplace transform करता क्या है, एक सिंपल टाइम डोमेन को कन्वर्ट करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यू नो दैट. वो फ्रीक्वेंसी डोमेन एस डोमेन में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. Not only common function can be converted into simple algebraic expressions, but calculus operation can also be converted into algebraic expressions. ठीक है, so आपने Laplace transform पढ़ा होगा, राइट? इसमें कैलकुलस में पढ़ा है आपने सबने, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, राइट? तो वही चीज़ है इसमें, ठीक है. So this is Laplace transform of derivatives, how to convert those time domain into Laplace transform, ठीक है. तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देखें, ये जो है आपका, ये जो फंक्शन है ये 1 के बराबर है, ठीक है. और ये जो x ऑफ t जहाँ पर आ रहा है तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे x ऑफ s. और जहाँ पर एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है x डॉट ऑफ t, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, s, ठीक है, डॉट x ऑफ s माइनस x ऑफ 0. नाउ व्हाई यहाँ हमने x ऑफ 0 क्यों पुट किया है, कैन एनीबडी टेल मी व्हाई यहाँ पर 0 क्यों किया है हमने? Why do we initial value 0 लेंगे इसलिए? Yes, exactly. इसलिए यहाँ पर हमने initial value 0 ली है, that's why we have written 0. ठीक है. If we have, yes, do you have any question? No. I'm saying because animation. Okay. If you have double derivative, then you will convert it into like x squared dot x of s minus x dot x 0 minus x dot 0. Okay, this is how you will convert the equation. We will be covering in next slide. Here, S? This one, double derivative. S. No. S. What's meaning S? S is something, is the kind of variable that is converting a time domain into S domain. Basically, what a Laplace transform do, it converts time domain into frequency domain, right? But here we are denoting time as S. This is what it is. Okay. Okay, time. S time. Yeah. It is converting a time domain into S domain basically. Okay. This is conversion basically. Now, for example, if you have L dx of t upon dt is equal to s x of s minus x of 0. Okay. So this thing, this particular function is equal to this. Okay, because this function is first order differential equation, right? This is first order. So the first order would be converted like this, as x of s minus x of 0. If we have second order differential equation, double derivative, then it is equal to s square x of s minus s dot x 0 minus dx of 0 dt. Same thing that I told you here. यही है, ठीक है. So in general, अगर इसका आप इक्वेशन देखें तो उसकी यही जनरल इक्वेशन यही बनेगी, ठीक है, where x of 0 is the initial condition of the system, ठीक है. So the time domain integral becomes division by s in the frequency domain. Okay, so the time integral becomes what is equal to this, ठीक है, 1 upon x x of s. यहाँ पर आपका इंटीग्रल आ रहा है तो उसको हम यहाँ ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है. ये हम एग्जाम्पल करेंगे, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी.
So यहाँ तक कोई, do you have any question? If you have any questions so far, then you can No, ask me, ma'am. then I'll continue. Okay, I think everything is clear, right? अच्छा, जब हम देख रहे हैं किसी लैप्लास को देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपका फिजिकल सिस्टम है, सॉरी, जो भी आपका कोई फिजिकल सिस्टम है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है उसका इनपुट भी सेम हो, आउटपुट भी सेम हो, ज़रूरी है, इज इट नेसेसरी कि कोई भी आपका फिजिकल सिस्टम है उसका इनपुट भी वही हो और आउटपुट भी सेम हो, ज़रूरी है ऐसा? Can anyone tell me? No, ma'am. Explain. ज़रूरी नहीं है ना? Why? Okay, let me tell you. You know about electrical motors, right? You know about electrical motors, you know about electrical generators, right? So for example, in electric motors, the input is electrical signal, right? Whereas the output is mechanical signal, right? So, yes. So since जो हमारी electrical energy है, वो क्या require करती है motors को rotate करवाने के लिए, ठीक है? Clear? Now similarly, आप example ले लें electrical generator का, ठीक है? अब electrical generator में क्या है? The input is, what is input in electrical generator? Sorry? Mechanical power. Electrical sign. No. In electrical generator, the input is mechanical signal and the output is electrical signal, right? So since mechanical energy is required to produce the electricity in a generator, so this is what it is about physical system. So it is not necessarily the output and input of a control system of same category. Input is different, output can be different. So for the mathematical analysis of a system, basically, all kinds of signals should be represented in similar form, ठीक है? तो हम जब हम ये कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सारी जो सिग्नल्स हैं इसको एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ये कब होता है? दिस इज डन बाय ट्रांसफॉर्मिंग ऑल काइंड ऑफ सिग्नल्स इनटू देयर लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें जो सिग्नल है उसको एक ही सिग्नल में दिखाना होता है. दैट इज व्हाई वी यूज लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिस्टम, सो दैट सिग्नल शुड बी in same category, right? Also, the transfer function of system is represented by a Laplace form by how it is represented. How do we represent a transfer function into a Laplace form? By, can anyone tell me? मैंने आपको अभी बताया था कि किसी ट्रांसफर फंक्शन को Laplace ट्रांसफॉर्म में डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं? What do? We just divide output with the input. सेम जो मैंने आपको बताया कि ये रेशियो होता है आउटपुट का इनपुट का, दैट वाज g of s is equal to c of s upon r of s, रिमेंबर? तो वही है, इसको हम इन टर्म्स ऑफ लैप्लास में ऐसे ही किया. सो एनी क्वेश्चंस? आई होप नो क्वेश्चंस, ठीक है? नाउ calculations of the transfer function. How do we calculate a transfer function? Now for example, here in this slide you can see example, ठीक है? Consider the following ordinary differential equation where y of t is input of the system and x of t is the output. Okay, so here यहाँ तो मैं लिखा हुआ है कि ना ये इनपुट जो है आपका y of t है और जो आपका आउटपुट है वो x of t है, ठीक है? तो अब एग्जाम में आपसे पूछूं कि व्हाट इज, मैं इनपुट आउटपुट नहीं बताऊंगी, ठीक है? आपको खुद देखना होगा आउटपुट क्या है इनपुट क्या है, ठीक है? सो द इक्वेशन इज a d square x of t upon dt square is equal to c dy of t dt minus b dx of t upon dt. This is your equation. Now, if you want to convert it for simplicity, हमने क्या किया, ये आपका डबल डेरिवेटिव है तो इसको हमने डबल डॉट कर दिया है, a x डबल डॉट ऑफ t इज इक्वल टू c y of t, एक डैश है इसमें, और माइनस dx of t, ठीक है? So these two equations are first order differential equation and this is second order differential equation. So overall जो हमारी equation है वो second order differential equation होगी, ठीक है? Now what is the next step? To convert this equation into Laplace transform. You know the table, right? Table हमने देखा था कि उसमें equations किस किस से बराबर है. जहाँ पर double derivative हो उसको हम कैसे denote करेंगे? With this, ठीक है? A would be same, x double dot of t would be s square x of s minus x of 0 minus x dash 0, ठीक है? तो this is equation of equal to this, ठीक है? अब c y dash of t इसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है? और b x of t किसके बराबर है? इसके बराबर है, ठीक है? ये हमारे एक Laplace ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन ऑफ मिल गई, राइट? एनी क्वेश्चंस? Oh, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Ask.
See why it's mean here input, ma'am? Sorry, why? You're Yes, asking yes. about y? Yes, y is the Yes, input yes. and x, yes, and x of t EX, is the output. EX, Yes, T equals CY. This here input, yes, and other one is output, here, BX. yes, yes. Y of t is input. Here it's written y of t is input and x of t is the output. Okay. 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 So now, if I ask you to obtain a transfer function of this equation, how would you do that? By that timetable, we should revise that timetable. No, you have done that step already, right? Now I want you to obtain a transfer function. A transfer function. So what is a transfer function basically? Anyone? What is a transfer function? Relationship between input and output. Yes. So it's the ratio of output to the input. Okay. So now you have obtained this equation, right? You obtained this differential equation. Now with the help of this, you will obtain a ratio, output to the input. How would you do that? First, you want to know what is the input and what is the output here. CY input. Yes. CY is input. Well, let's see. Now, this next step is consider all the initial conditions are 0 in order to find the transfer function of the system. Okay, so you have, once you know that all initial conditions are 0, then you will get this equation: a s square of x of s is equal to c s y of s minus b s x of s. Now you can see you have obtained a very simple equation, right? Previously, if you अगर आप पहले आप इसके इनिशियल कंडीशन नहीं निकालते, 0 नहीं रखते, तो आपको क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाती है, राइट? सो यहाँ पर हमने क्या किया, इनिशियल कंडीशन 0 रखती, ठीक है, तो हमें एक सिंपल इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये आ गई ए एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू सी एस वाई ऑफ एस माइनस बी एस एक्स ऑफ एस, ठीक है, ये सारे 0 0 हैं, तो यू विल नॉट कंसिडर दिस इक्वेशन, ठीक है, ओके. नाउ लास्ट स्टेप वुड बी रीअरेंज द अबव इक्वेशन, ओके, रीअरेंजिंग द इक्वेशंस, ठीक है. तो हमने इक्वेशंस को रीअरेंज कर लिया है, तो हम कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है. ए एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस प्लस बी एस एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू सी एस वाई ऑफ एस, ठीक है. सॉरी. नाउ व्हाट्स द इनपुट? इनपुट इज वाई ऑफ एस एंड आउटपुट इज एक्स ऑफ एस. ओके, सो आप क्या करें, सिंपल शिफ्ट करें इक्वेशंस को, ठीक है. एक्स ऑफ एक्स को यहाँ रख दिया आपने, जो उसकी इक्वेशन थी उसको यहाँ रखा, ठीक है, जो आपके इनपुट की इक्वेशन है उसको दूसरी साइड रखा, ठीक है. अब बस दोनों का रेशियो निकालें, एक्स ऑफ एक्स यहाँ सेम ही रहा, वाई ऑफ एक्स यहाँ आके डिवाइड हो गया, ठीक है. नाउ द इक्वेशन यू विल बी हैविंग इज सी एस अपॉन ए एस स्क्वायर प्लस बी एस इज इक्वल टू सी अपॉन ए एस प्लस बी, ठीक है. तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन. क्लियर? मैम एस स्क्वायर कहाँ गया? मैम जो इनिशियल जी. यस. एस स्क्वायर आप कौन सा पूछ रही हैं? ये वाला? मैम मैम ये लास्ट रहा। में जो है ए एस स्क्वायर प्लस बी, ये नीचे आ गया, ये रहा. इसको आपने मैम ये तो समझ यहाँ आ गया. अच्छा, ये कह रही हैं आप? यस मैम. इन दोनों ने कॉमन निकाला हुआ है, ठीक है. यहाँ पर कॉमन निकाला, ठीक है, कॉमन निकाला तो एस यहाँ से कैंसिल हो गया. समझ आया? देखें, ठीक. ये यस मैम. यस ये इसको कॉमन निकालेंगे आप, ठीक है, इसको कॉमन निकाला, ठीक है, तो एस तो बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी और एस नीचे आ गया, तो इसको और यहाँ पर जो एस कॉमन निकाला उसको कैंसिल कर देंगे, तो योर इक्वेशन विद सी अपॉन ए एस प्लस बी. एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं पानी पी के आऊँ, होल्ड कीजिए. ओके मैम.
यस, तो यहाँ पर आप क्लियर है आपको यहाँ? एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. सॉरी. सो इन जनरल तो आपकी इक्वेशन है somehow it's like this, ठीक है? यहाँ पर देखें, ये आप इक्वेशन देख रहे हैं, यहाँ पर where x is the input of the system and y is the output of the system, ठीक है? So the transfer function is equal to g of s is equal to output and input. This L shows the Laplace, okay? Laplace of the output and Laplace of the input. Assuming all the initial conditions are 0, okay? So this is your input and this is your output. So how would you do that in terms of transfer function? Y of s upon x of s. So this all b equation आपने यहाँ पूरा रखा, ठीक है? और जो आपकी इनपुट की इक्वेशन है वो आपने यहाँ रखी, ठीक है? तो बेसिकली ये है आपका ट्रांसफर फंक्शन. सो व्हेन, और अब देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है? ऑर्डर क्या है ट्रांसफर फंक्शन में? ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है? तो इसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, ऑर्डर क्या होगा सिस्टम का? सो व्हेन ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, द ट्रांसफर फंक्शन इज सेड टू बी प्रॉपर, ठीक है? अगर डिनोमिनेटर का जो ऑर्डर है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर का जो ऑर्डर है वो ग्रेटर है विद द ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, देन द ट्रांसफर फंक्शन इज सेड टू बी प्रॉपर. Then you will call a transfer function that is proper. Otherwise it is called improper, ठीक है? If I आगे चल के मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी, ठीक है? Then I'll ask you whether the system is proper or improper. Then you have to tell me कि इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है? ये सिस्टम प्रॉपर बनेगा या इम्प्रॉपर बनेगा, ठीक है? Now coming to stability of a control system. So what is stability? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि स्टेबिलिटी क्या है. So you know, for the control system, stability is the main stability, accuracy, precision, ये मेन चीज़ें होती हैं जो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है? अगर सिस्टम अनस्टेबल है तो सिस्टम में बहुत मसले आ सकते हैं, ठीक है? सिस्टम फिर सही काम नहीं करता. सो स्टेबिलिटी देखना स्टेबिलिटी को चेक करना इज़ वेरी नेसेसरी. सो व्हाट इज़ बेसिकली स्टेबिलिटी? अ सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल इफ इट्स आउटपुट इज अंडर कंट्रोल, और इन सिंपल टर्म्स, और आप कह सकते हैं कि सिस्टम अदरवाइज जो सिस्टम है हमारा अनस्टेबल है. अब सिस्टम स्टेबल कैसे होता है, ठीक है? अ स्टेबल सिस्टम प्रोड्यूसेस अ बाउंडेड आउटपुट फॉर अ गिवन बाउंडेड इनपुट, ठीक है? हमारा सिस्टम है ये, फॉर एग्जाम्पल ये आप सिस्टम देखें, ठीक है? तो सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पर तो स्मूथली सिस्टम स्टेबल जा रहा है, कहीं पर ऐसा सिस्टम आता है यहाँ पर आपको ऑस्किलेशन आती हैं, ठीक है? कुछ ऑस्किलेशन के बाद वो अपनी फाइनल वैल्यू में आ जाता है, ठीक है? फाइनल वैल्यू में पहुंच जाता है और फिर अपने इन्फिनिटी की वैल्यू में चला जाता है. सो दैट थिंग इज स्टेबल, ठीक है? अगर ये सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल दिस सिस्टम, ये अपनी फाइनल वैल्यू में ना पहुंचे और ये कहीं और चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ऐसे ऐसे करके चला जाता है, तो दैट सिस्टम इज अनस्टेबल, ठीक है? तो सिस्टम प्रोड्यूसेस अ बाउंडेड आउटपुट फॉर अ गिवन बाउंडेड इनपुट, ओके? और इन सिंपल टर्म्स यू कैन से अ सिस्टम रीचेस टू इट्स डिजायर्ड वैल्यू आफ्टर सम टाइम, ठीक है? और फिर इन्फिनिटी पे चला जाता है, तो उसको हम स्टेबल कहते हैं. तो हमें सिस्टम की पता कैसे चलेगा कि हाउ वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल? उसके लिए हम पोल्स और जीरोस को देखते हैं, ठीक है? वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं. नाउ दिस इज द रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम फॉर यूनिट स्टेप इनपुट. ये जो सिस्टम है दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है? फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, this response has the values between 0 and 1, so it is bounded output, ठीक है? We know that the unit step signal has the value of 1 for all positive values of t including 0, so it is bounded input. अच्छा, ये जो यूनिट स्टेप है, इम्पल्स सिग्नल है, और दूसरे जो सिग्नल्स हैं इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो. Therefore, the first order control system is stable since both the input and the output are bounded. जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था जो मैंने आपको यहाँ दिखाया ये वाला, ठीक है? इसमें जो सिस्टम है हमारा क्या है, इसमें बाउंडेड इनपुट भी है और बाउंडेड आउटपुट भी है. बोथ आर बाउंडेड, सो दैट मीन्स द सिस्टम इज स्टेबल, ओके? नाउ मूविंग टू द पोल्स एंड जीरोस, ठीक है? अगर आपने एक ट्रांसफर फंक्शन ऑपरेट कर लिया है, ठीक है, तो उसमें एक न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है? जो आपकी जो रूट्स होते हैं इन द न्यूमरेटर, ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन आर कॉल्ड पोल्स, ठीक है? तो आपके डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो रूट्स निकलते हैं, ठीक है, जो आप रूट्स ऑब्टेन करेंगे दैट वुड बी योर पोल्स, ठीक है? एंड द रूट्स इन द न्यूमरेटर वुड बी जीरोस. नाउ व्हाट आर पोल्स एंड व्हाट आर जीरोस, इसको हम देखते हैं.
poles of the system are represented by x and zeros of the system are represented by 0. ठीक है, तो अगर आपको पोल्स को देखना है, ठीक है, तो वो उसको आप डिनोट करना है तो उसको आप x से डिनोट करेंगे और 0 को आप सर्कल से. ठीक है, सिस्टम order is always equal to the number of poles of the transfer function. अच्छा, if you have any system, ठीक है, आपके पास कोई ट्रांसफर फंक्शन है और उसका आपको you have to find its order. What is its order? Then you will look into the number of poles. Number of poles कितने हैं? ठीक है, पोल्स आपको कहाँ नजर आएंगे? यहाँ पर आएगा या यहाँ पर? एनीवन? पोल्स को कहाँ डिफाइन? पोल्स किसके रूट्स हैं? न्यूमरेटर के हैं, डिनोमिनेटर के हैं? डिनोमिनेटर. एग्जैक्टली. तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो आपके कहाँ क्या पोल्स होंगे. ठीक है, तो पोल्स में आप देखेंगे कि इसकी पोल्स की जो ऑर्डर है, ठीक है, वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है. ठीक है, तो उसको आप देखेंगे तो आप इसके थ्रू आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो सिस्टम है आपका, इसका ऑर्डर सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है, क्या है. ठीक है, following transfer function represents the nth order plant, that is any physical object. ठीक है, this shows the transfer function of any nth order plant, that can be any physical object, right? तो इसका transfer function ये होगा. Here m represents what? Zeros and n represents poles. ठीक है, a poles is also defined. Yes, What is the poles right now? Yes. sorry, what are poles? Yes. No, yes. In y-axis poles or are axis? x. You will denote poles as x. Okay. I mean and if you under want to do, yes, here. ASN plus A1SN. This one. Okay. Yes. n minus 1. This is your poles. Okay. And this What is about m, B? m YS. ys. Where it is ys? Oh, this Y. this one. Yeah. Upper one. This one. YS equal B0 SM plus this one now. Yes. Also both. This is your, yes. These are your roots. Okay. The S thing is your roots, but this is your, this is your input. Okay. This is this is your output and this is your input. So in Where that is input and output, what are you asking basically? You're asking where are the poles and zeros, or you're Yes, asking what are m? I'm asking what are the poles? Okay, I'm telling you. I'm coming to that. Here in this case, poles are this n. Okay, and here zeros are m. Okay, now I'm coming to the next slide, then you'll get the idea. Okay, so poles is also defined as the frequency at which system becomes infinite. Okay, so frequency at which you can see that the system is going to infinity, that is called poles. Hence the name pole, which poles where field is infinite. Okay, so here you can see, and 0 is the frequency at which system becomes 0. So this is the difference between poles and zeros, where the frequency goes to the infinity. Okay, at a time at which the system goes to infinity, that is called poles. Okay, and 0 is the frequency at which system becomes 0. Now here you can see, you know about the black hole, right? A magnetic pole or a black hole. Now it is some kind of poles. Okay, you can see that poles is also defined as it is the frequency at which system becomes infinite. So the example is a magnetic pole or a black hole. Okay, here you can see this picture. Here the frequency is infinity in black hole or in magnetic pole. Now consider the function calculated in the previous slides. Okay, this is your equation. G of s is equal to x of s upon y of s is equal to c as plus b. Okay, so the denominator of polynomial is as plus b is equal to 0. So what would be the poles here? Now if we want to find the pole, okay, so the concept of finding a pole would be this, take this denominator and make it equal to 0. ठीक है, ये जब इसको 0 में इक्वल कर दिया है आपने, तो फिर आप s की वैल्यू निकालें. ठीक है, s की वैल्यू निकालेंगे तो s की वैल्यू कैसे निकलेगी? s इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो ये जो है आपका पोल मिल गया. ठीक है, ऐसे ही आप इसको पोल्स को फाइंड करेंगे. इफ आई आस्क यू टू, यस मैम, ये ट्रांसफर फंक्शन कहाँ पे कैलकुलेट करा है पहले? मैम ये पहले तो दिखा नहीं है. ये वाला यहाँ पर, इसमें as प्लस b, यहाँ पर ये वाला. ठीक है, यस दिस सेम हियर.
समझ आया आपको? ये प्रीवियस एग्जांपल से लिया हुआ है यस इसने, मैम। ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर मैं कहूँ आपको कि यहाँ पर पोज जीरोस फाइंड करना है तो हम नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। हियर नाउ द पोल्स एंड जीरो ऑफ द सिस्टम आर प्लॉटेड इन एस प्लेन टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अगर आपको कोई सिस्टम का स्टेबिलिटी मालूम करनी है तो हम पोल्स एंड जीरोस को एक प्लॉट, उसका एक प्लॉट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एस प्लेन, ठीक है। दिस इज योर एस प्लेन, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका LHP और राइट HP, ठीक है, लेफ्ट हैंड प्लेन और राइट हैंड प्लेन, ठीक है। और ये आपका एस प्लेन। तो यहाँ पर अगर जीरोस की जो वैल्यू आपको ऑप्टेन है हम उसको सिंपल प्लॉट करेंगे और देखेंगे वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबल होता है, the other is unstable and the third is marginally stable, okay. So how we would know that if the system is stable? So if all the poles, not the zeros, ध्यान रखें, जो भी आपके पोल्स ऑफ द सिस्टम है वो लाई करते हैं यहाँ पर लेफ्ट हाफ प्लेन में, ठीक है। तो लेफ्ट हाफ प्लेन में कोई भी आपका जो पोल्स हैं यहाँ पर लाई करते हैं, दैट मीन्स सिस्टम इज स्टेबल। इफ एनी ऑफ द पोल, भले यहाँ पर भी आपका पोल एक यहाँ पर है और दूसरा पोल आपका राइट हाफ प्लेन में चला जाता है, ठीक है, तो फिर आपका पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। और इफ पोल, एनी ऑफ द पोल लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ पर कोई पोल आपको यहाँ लाई करता है, दैट मीन्स द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, ओके। सो यहाँ पर देख लेते हैं। What is X and what is 0? X represents what? Anyone? पोल अगर मैं Output. पोल, Output. ओके, सो तो फॉर एग्जांपल हमारे पास वी हैव ऑप्टेन पोल्स, ठीक है, और एक यहाँ पर है, दिस इज Ma'am, X means poles. यस एग्जैक्टली पोल्स। दिस इज योर राइट हैंड प्लेन, ओके। Now can you please tell me, is this system stable, unstable, or margin stable? स्टेबल मैम, Why it is stable? because the poles are on the left side. Yes. And what about this one? Is it stable, unstable, or Marginally margining? Yes, because it lie on Imagining. yes, imaginary axis, okay. And if the poles are located here, then system would be unstable, Unstable. okay. Clear? Yes, ma'am. Let's see this example. So this is a related to previous example, but we have put the values in it, okay. So g of s is equal to c upon as plus b, okay. So just let's assume a is equal to 1, b is equal to 3, and c is equal to 10. Then what would be your pole? Pole would be equal to -3 here. So it will lie here, right? Pole हमारी जो होंगी यहाँ पर lie करेंगे, तो this system would be stable, ठीक है? Clear है? Is it clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Now moving to another example. Now let us explain the concept of poles and zeros of transfer function through an example. Now look at this example. Okay, g of s is equal to s plus 1, s plus 2 upon s plus 3, s plus 4, s plus 5, s plus 2 minus 4j और ये जो so on, ठीक है। तो यहाँ पर दो इमेजिनरी पॉइंट्स भी आ रही हैं, राइट। नाउ यहाँ पर कैन एनीवन टेल मी यहाँ पर जीरोस क्या होंगे? So the zeros of the function are -1 and -2. इसको हमने equal to 0 रखा, ठीक है। तो जो हमें zeros obtain हुए, that would be -1 and -2, and the poles would be -3, -4, -5, -2 plus 4j, -2 minus 4j. Okay, so these are the zeros, and those are the poles. Now here you can see what is n. N is the number of zeros. Okay, so n is 2, and m is number of poles. Okay, so poles we have 5. So you can see that n is less than m. Okay, so if n is less than n, then m minus n would be 3. The function will have 3 zeros at
s when s goes to infinity. Okay, the poles and the zeros are plotted in the figure shown in next slide. देखिए आप यहाँ पर देखिए हमारे जो ये जो है क्रॉस वाले ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें what they are representing poles. Okay, Poles. and these two are yes, and these circles, small circles shows zeros. Now can you please tell me what is this system? Is it stable or unstable or marginally stable? Stable. Stable because ma'am. why? Yes, in because left all half. the poles Left are half. located in left half. Oh yes, exactly. Let's take Ma'am? another example. Yes. मैम जीरो से फर्क पड़ता है क्या अगर जीरो लेफ्ट साइड पे हो तो? नहीं उसका फर्क कोई नहीं, हमें सिर्फ पोल्स को देखना है, that's it. मैम फिर हमको शो क्यों कर रहा है जब हमसे फर्क ही नहीं पड़ता मैम? जरूरत नहीं है उनकी मेरे ख्याल में. नहीं इसमें तो जरूरत तो नहीं, अगर स्टेबिलिटी को देखना है तो हमें जीरोस को हम देखते ही नहीं है, ठीक है. When you're talking about stability, you don't have to see to zeros. Zeros को हमें देखना ही नहीं है, ठीक है. हमें सिर्फ पोल्स को Okay, देखना ma'am. है, पोल्स कहाँ जा रहे हैं, ठीक है. तो इसको हम जीरोस को कंसीडर ही नहीं करेंगे. यहाँ से एग्जांपल मैं आपको दिखाने के लिए दिया हुआ है, that's it. Now दूसरा एग्जांपल देखते हैं. s minus 2, s plus 5, s plus 8 upon s, s plus 1, s plus 6 and so on, ठीक है. Now in the above transfer function, if the value of the numerator is 0, then here zeros are s is equal to 2, minus 5 and minus 8. Okay, these are the location of zero of the function. Now similarly in the above transfer function, if the value of the denominator is 0, then these are the poles that we have obtained. Okay, now these are the location of poles of the function. Okay, now the poles here, 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 here and here. So there is one pole is going where 0 पर है, ठीक है. तो ये हमारा सिस्टम कहाँ क्या होगा? Marginally. Yes. Now let us consider a system that is simple RL circuit, ठीक है, where we have resistance, inductance across a voltage source. So here in this circuit the current I is the response due to applied voltage as cause. ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास करंट है वो रिस्पॉन्स है किसकी वजह से? इस वोल्टेज की वजह से, ठीक है. तो इसमें आप बताएं इनपुट जो होगा हमारा वोल्टेज होगा और आउटपुट जो मिलेगा वो करंट होगा, ठीक है. क्योंकि हमें जो because the current is obtained with the response of this voltage, so this is your output and this is your input. Okay, so how would we obtain this equation? Now the first step is to obtain a differential equation, right? How would we do that? With the help of mathematical modeling that we did in our previous lecture, remember? So from circuit we get, यहाँ पर circuit को देखें तो हमें जो equation obtain होती है वो होती है RI plus L DI upon dt. याद है आपको? अगर आपने RLC circuit को अच्छी तरह पढ़ा होगा तो ये बात भी आपको clear होगी, ठीक है. So now we have to convert this equation into Laplace in S domain, right? So V would be V of S is equal to Ri of S plus L di upon dt. First order differential equation, right? इसको हम कैसे convert करते हैं? S I of S minus I of 0. This is your initial condition, right? इसको हम consider नहीं करेंगे. Then अब यहाँ देखना है कि initially inductor becomes as open, hence I is equal to 0. क्योंकि यहाँ पर हमने इंडक्टर को क्या किया? ओपन कर दिया. तो इसमें क्यों? क्योंकि हमने इनिशियल कंडीशन को क्या है? 0 रख दिया है. So that's why this inductor would be initially it would be what? 0. Okay, so it is open. So after that solving this above equation, the equation we will obtain would be V of S is equal to I of S R plus LS. ठीक है, तो इसको हमने VS को एक अलग पोर्शन में रख दिया, I of S को अलग रख दिया, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो to obtain a transfer function. Now see, I of S was your output, right? So it will remain same. V of S is multiplying here, तो यहाँ पर आके डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड होगा और 1 upon R plus LS होगा, ठीक है. अगर उसको हम फर्दर करें तो इसकी ये आपकी इक्वेशन ओपन हो जाएगी, ठीक है. इज इट क्लियर? सो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम. यस मैम, जो हमने तो L डबल डेरिवेटिव लिया था ना इलेक्ट्रिकल सिस्टम में. कहाँ पर? मैम यहाँ पे अच्छा, हमने L जो लिया वो फर्स्ट ठीक है, वहाँ ऑर्डर पर है. आप हाँ फर्स्ट ऑर्डर है. आप देखें वहाँ पर आपने देखा था कि एक पैरेलल में था और एक दूसरा सीरीज में था, तो उन दोनों में फ़र्क था, दोनों में फ़र्क आ रहे थे. एक में कैपेसिटर डेरिवेटिव आ रहा था और उसमें इंडक्टर में आ रहा था, ऐसे कुछ था, याद है? आप अगर प्रीवियस लेक्चर गौर से देखें तो उसमें ये चीज़ थी. तो इसी में भी वही हो रही है. यहाँ पर आपका जो R और L है
वो सीरीज में है, ठीक है, इसलिए। सो यहाँ जो आपको ट्रांसफर फंक्शन मिला g ऑफ एस इज इक्वल टू आई ऑफ एस अपॉन v ऑफ एस, दिस इज योर इक्वेशन, रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, ओके। नाउ these are examples, 4 different examples. I want you to tell me the poles of the system, the zeros of the system and order of the system, ठीक है। Now यहाँ देखें आप, यहाँ पर poles क्या है, can anyone tell me what यहाँ पर poles क्या होंगे? S into S plus पहले हम क्या करेंगे, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइक को म्यूट करें, सॉरी म्यूट कर लें, यस। सो इन दिस फर्स्ट एग्जांपल व्हाट विल यू डू, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके फिर आप उसकी पोल्स को ऑप्टेट करेंगे, ठीक है। आपको पोल्स क्या मिले, किसने अभी बताया? -2 and 0. यस, ठीक है, -2 and 0 आर योर पोल्स, ओके। नाउ आई वांट यू ऑल टू टेल मी द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, हाउ वुड वी फाइंड द ऑर्डर? रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। Yes, ma'am. कैसे? Ma'am, first order. सॉरी, First order होगा ma'am. if you want to know the order of the system, just go to this equation, पोल्स की जो इक्वेशन है ये वाली, यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें ऑर्डर क्या है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा s स्क्वायर प्लस 2s, यही मिलेगा ना, s स्क्वायर प्लस 2s इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो इसमें s स्क्वायर है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। सो द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम वुड बी 2, यस, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द जीरोस, -3 आपके 0 है, सिंपल। अब सेकंड एग्जांपल में आ जाएं, हियर s plus 1, s plus 2 plus s plus 3। तो जाहिर बात इसको सॉल्व करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पर इसमें बताएं कि ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पर, व्हाट विल बी द ऑर्डर? थर्ड order होगा, थर्ड, थर्ड होगा। थर्ड होगा, ठीक है। और थर्ड ऑर्डर होगा। यस, व्हाट अबाउट थर्ड एग्जांपल? यहाँ पर भी 3 ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर, ठीक। और सेकंड फोर्थ में भी सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर। ऐसे आप, यस, और यहाँ पर जीरोस भी आप मालूम कर लेंगे और पोल्स भी आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज फॉर योर होमवर्क, ठीक है, आपको सॉल्व करें। अब दूसरा एग्जांपल में आ जाए, a shaft of an inertia j is rotated for an angle theta due to the applied torque t against a bearing friction f, ठीक है। Find the transfer function of a system. This example of rotational mechanical system, remember? तो वही सेम इक्वेशन है। The differential equation from form of the above statement is t of s, ठीक है, is equal to g d square theta upon dt square plus f d theta upon dt square। अब इसका हम दोनों का लैप्लास निकालेंगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बोथ साइड ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये आपका इनपुट है और आपका आउटपुट क्या मिलेगा इसमें, दैट विल बी योर आउटपुट, ठीक है। जाहिर बात है आपकी जो कोई भी शाफ्ट है रोटेट हो रही है, ठीक है, तो इसको आपने इनपुट क्या दिया, टॉर्क इनपुट दिया, ठीक है। जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन मिलेगा, दैट इज द थिंग्स। ts इज इक्वल टू जे डी स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका एक लैप्लास बता रहा है, लैप्लास ऑफ दिस एंड लैप्लास ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये आपको मिलेगा जे एस स्क्वायर थीटा ऑफ एस, सॉरी जे क्या है मैम? जे, ये दिस वन, ये इनर्शिया है, इनर्शिया। ये आपने लेक्चर नहीं पढ़ा मैकेनिकल सिस्टम, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है ना, उसमें आप जाएंगे तो उसमें ये जे होगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है बेसिकली, ठीक है। जे की इक्वेशन को आपने साथ रखें, ठीक है। तो इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, ये डबल डेरिवेटिव है तो उसको ये इक्वेशन ऑप्टेन होगी, इनिशियल कंडीशन हमने दी है। फिर इसको जो है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हमने इसको लिखा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, थीटा ऑफ एस, ठीक है, और इनपुट क्या है हमारा, टॉर्क है, टी ऑफ एस, ठीक है। तो थीटा ऑफ एस किसके बराबर होगा, जे एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एस, ठीक है। तो अगर इसको हम टर्म्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन में लिखें तो हमें क्या मिलेगा, थीटा ऑफ एस अपॉन टी ऑफ एस 1 अपॉन जे एस स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एस, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन मिलेगी किसकी, एक रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। अगर मैं इसमें आपको वैल्यूज दे दूँ, जे की वैल्यू दे दूँ
और फोर्स की वैल्यू दे दूँ, ठीक है, और देन फिर मैं आपको कहूँ कि इसका रूट्स और zeros मालूम करें तो that will be easy for you, right? So the main steps for obtaining a transfer function are, first of all, you should know what is the input, what is the output, then obtain a differential equation, then convert that equation into a Laplace transform, assuming all initial conditions are 0. Okay, once you obtain that, then just put the ratio of output to the input, and then you will get the transfer function. So that here you can see, as the applied torque is input and the output angular displacement is output of the system. Okay, so this is the end of your lecture. If you have any questions, you may ask. बाकी जो next है मैं आपको next class में करवा दूँ, ठीक है? If you have, do you have any questions? No, ma'am. सबको clear है? Easy था ये तो. So in our next class, we will be covering the responses: unit step response, step response, impulse response, और first order differential equation के response कैसे मिलता है, second order differential equation का response कैसे मिलता है. So we will be covering in our next lecture. ठीक है? So let me take your attendance. Yes. Ma'am, please share the slides. You want to see the slides? Miss, slides share कर दें. जी जी. मैं शेयर कर दूंगी इसमें. 5 में शेयर कर दूंगी, ठीक है? अभी आपको देखनी है स्लाइड्स को. Okay. Yes, ma'am. सॉरी, आपकी आवाज़ कम आ रही है. मैं आपकी स्लाइड्स तो मैं आपको शेयर कर दूंगी. अभी शेयर करूं? अभी दिखाऊं आपको स्लाइड्स? यू आस्किंग दैट? He's saying share the saying? slides. Share the Yes, slides. Just okay, I will. First, let me take your attendance and I will share your slides. Okay. So, Mavish Fatma. Present, ma'am. Anwar Ali. Present, ma'am. असदुल्ला मेमन. मैम आपने मेरा नेम लिया है? जी जी. मैम प्रेजेंट. मैं आपकी आवाज़ ठीक है. कट के आ रही. हाँ, वो शायद सिग्नल्स का प्रॉब्लम है इसलिए. बिलाल राजा. जी मिस प्रेजेंट. कामरान. Present, ma'am. मंसूर. प्रेजेंट मैम. मोहम्मद फतुल रहमान. present, ma'am. Ma'am, my name is Fath Ar-Rahman, not Fadul. Fath. फतुल. Okay, okay. Mr. Mohammad Ruman. Zohaib. Present, ma'am. Noman. प्रेजेंट मैम. परवेज अली. Present, ma'am. रजा. Present, ma'am. मोहम्मद अली. प्रेजेंट मैम. नेता तारिक. प्रेजेंट मैम. अच्छा, मोहम्मद अली, आप मुझसे पूछ रहे थे कि अभी स्लाइड शो करूं? सॉरी. Excuse me, ma'am. यस. Ma'am, I'm Roman, roll number 47. I'm also present, ma'am. ओके ओके. अच्छा मोहम्मद अली, आप क्या पूछ रहे थे कि मैं अभी आपको स्लाइड शो करूं या शेयर करूं फाइल्स में? मैम शेयर कर दें. यस, मैं शेयर कर रही हूँ. अभी कर देती हूँ, ठीक है, फाइल्स में. मैम रोल नंबर 40 की वो बैटरी डेड हो गई है.
उनकी ठीक भी है, उन्होंने अटेंडेंस क्लास लगा। ठीक है, उन्होंने क्लास ज्वाइन की थी। यस मैम। रोल नंबर क्या है? 40। यस मैम। ठीक है, और नौमान सगीर ने भी लिखा हुआ है, मैसेज किया हुआ है, वो तो प्रेजेंट है अभी 50। ठीक है, और रोल नंबर 23। ओके सही है, ठीक है, मैं मार्क कर देती हूँ अटेंडेंस। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।